अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के स्पार्को और इंडिया के इसरो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आज हम बात करते हैं स्पेशली ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही करंटली इन है और इस बारे में काफ़ी बहस चल रही है, जो कि इसरो ने अपना एक मिशन जारी किया है चांद के लिए। चंद्र नारायण 3 नाम है उसका। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट इसरो। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड और मैं भी समझना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी सुपार्को, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे है और हम इस वक्त अभी तक ज़मीन पर क्यों हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ पाकिस्तानी ऑडियंस। बात पर हम लोग खुद भी अपने आप को बेलिटल करते हैं। हर मुल्क का अपना, दिस इज़ first I would like to say that there is no comparison between India and Pakistan as such economically and everything. SPARCO was the Pakistan space program started in 1962. NASA trained most of the Pakistani because in 1955 Pakistan went into CENTO and the American Defense Pact. Okay. So NASA scientists trained most of the Pakistani space scientists. Okay. In early, late 50s. In 1962, we started SPARCO, which was the Pakistan. India started probably in 1968. After us. And we were the first country we launched a rocket for the first, I think we were the third, yes, we were the third country in Asia and 10th country in the world to send a space rocket unmanned in 1962. REHMAN 1 SPARCO ने भेजा था. Okay. India launched later in 68, 69 जब फॉर्मेशन के बाद अपना unmanned, and then obviously जो ISRO का budget है right now is about $1.9 billion compared to SPARCO is around $36 million. Oh. तो there is no comparison. ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, लेकिन इस शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी. शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी because we were the American allies, funding came. But हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी. हमने बदर 1 पाकिस्तान ने भेजा with the Chinese. Then we sent another rocket later in late 90s. Badr 2 जो कि मतलब basically built in Pakistan, but obviously it didn't work out. But ISRO, hats off to the teams, from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable. As a South Asian, I'm so proud of ISRO for what they're doing. और याद रखिएगा ये 1.9 इसरो इस वक्त क्या कर रही है, जो कि मैं इस वक्त का कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम कितना पीछे हैं एज अ सुपार्को. First, you need to understand the space program India started. Just to give you a perspective, why a country needs a space program, it is very important. It's not that कि आप लोग दिखा रहे हैं कि चांद पे जा रहे हैं. बहुत सारे लोग इंडिया पे तनकीद भी करते हैं. India is a lower income group country and launching space rockets. India has a perspective, or India knows why it's sending it. Space and rocketry helps you understand not just space, but it's now a matter of national security. India, I'll take you back to the Kargil war. हुआ ये कि आपने GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, जो फ़ोन पे यूज़ करते हैं. द इंडियंस जब हमारे लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे टाइगर हिल्स, सो कॉल्ड हमारे जो लोग थे, इंडियंस बॉट इन बुफोज विच वर टू एक्चुअली शूट on the hilltops. Okay. They need कोई भी आर्टिलरी गन जो होती है उसे पोजीशन चाहिए होती है जिस पे आप सेट करते हैं GPS के थ्रू. और तो इंडियंस वर गिवन अमेरिकन सेट्स टू which actually gives you a GPS location of enemy and yourself obviously. और फिर उसके लिए आर्टिलरी के लिए यूज़ होती है डिफरेंट पोजीशन. For 3 days the GPS for the Indian army was not working, or it was not working, it was giving wrong signals. क्यों? Apparently GPS is owned by an American
company, the Americans came in and they wanted to delay a war. It somehow helped our Pakistanis because Americans बहुत pressure डाल रहे थे पाकिस्तानियों को पीछे वापस आने देने के लिए. Indians were, you know, bombarding them and killing them. So the Indian GPS got jammed for 3 days. India realized after Kargil war that they need their own GPS system. China did it, and I think China launched it in 2012 for the civilian, and Chinese military is using it since 2014 their own GPS system, Beyond or something like that. So Indians are on plan. तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी के लिए GPS सिस्टम बहुत ज़रूरी है. तो India is on the verge of creating its own GPS अभी system. बनाया नहीं है लेकिन उन्होंने. It's all, I think it's work in progress. Probably they've made it and they've not launched it, but they're still checking it. But they have the hardware and the space to do it. Okay. Secondly, obviously, you know, the Americans during Trump administration, they formed the Space Force, which is the Space Army. So the Chinese have this capability and the Americans has to hit satellite in the space. अगर आपकी और जो satellite जो होती हैं वो communication के लिए भी use आप कर रहे होते हैं indigenous अपनी. Secondly, आप weather predictions उससे कर रहे होते हैं. आप बहुत सारे दूसरे national security के काम जो communication के लिए होते हैं जो अपना use कर रहे होते हैं. India is becoming a global power. India is an emerging, one of the second biggest economies in the world now, is emerging to be the second biggest economy after China, and it will be eventually in some years, bypassing everyone with its growth. So India thinks as an independent, you know, superpower, something, you know, it's a growing power, that it needs its own communication, its own satellites. So this is work in progress for them. ISRO. Basic understanding ये है, and that's very important, I think. हम पाकिस्तानियों को ये awareness देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. They are working for the next 50 years. और उसके बाद जो है important, आपने comparison, I think Pakistan has a BS program for space technology in 3 universities only. India has over, you know, 100 universities offering similar programs. Obviously हमारी प्रायोरिटी मुख्तलिफ है. मुझे लगता है कि है ही नहीं इस हमारी प्रायोरिटी. वी आर अ कैश स्टाफ्ड कंट्री, तो हमारी प्रायोरिटी हो भी नहीं सकती कि अब हम सैटेलाइट्स भेजें चीज़ों पे. आई थिंक वी आर अ डिक्लाइनिंग पावर चीज़ों पे. अभी हम अपने कॉन्सेंट्रेट ऑन अपनी इकॉनमी पे करें तो बेहतर है. आई थिंक स्पार्को शुड बी अ लीस्ट. आई थिंक सुना है कराची में हेड ऑफिस है, हाउसिंग स्कीम बना दी है उन्होंने. तो मेरे ख्याल से वी somehow end up, I think they are very brilliant, good people working in SPARCO. I know some of them, but I think obviously they are underfunded. If they've given a good funding, I think there's no doubt they could work because they've worked before. There's no power to stop them. But ISRO, you know, hats off to them. Is you know, has done wonders. और ये एक बात याद रखनी चाहिए कि इसरो में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है from South India, and I think that is a brilliant thing. It shows how, you know, females have taken, you know, on this program. It's space is a lot of calculations and mathematics, you know, physics involved in it, and I think Narendra Modi's government, BJP government, should be given full marks for ISRO and reviving. They had a space program, but I think the funding has increased during Modi's government, or it gives a new confidence to an average Indian कि यार हम कर सकते हैं. बाय द वे जो ISRO 1.9 बिलियन में कर रहा है वो अमेरिकन्स $20 बिलियन बना के कर पा रहे हैं. तो the rockets they have sent cost peanuts as compared to Americans. The technology Indians have now in space is not just quality, but the cost is so reduced. So that shows no financial corruption. That shows, you know, integrity and dedication towards their own country. चीज़ों पे. वेरी गुड पॉइंट यार. ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि एक हम तो न्यूज़ देखते हैं ना बेसिकली
कि इंडिया ने ये कर दिया, अब इंडिया ने ये किया कैसे, उसकी हमारे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मिनिस्टर फवाद चौधरी मेड अ जोक अबाउट I remember this. Last time जो उनका fail हुआ था फेल हुआ था, but what would he say about this today? But point is कि वो गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, ऐसा ही है, जंग में, बिल्कुल सच है। At least they are trying and they have और आज done it. देखो अभी एक और अभी उन्होंने छोड़ा है चंद्रयान जो है वो 2, और वो जाएगा भी मून पर लैंड होगा And the नहीं next होगा। program is to take humans. The astronauts are actually being trained right now. Yes. Indian space program would eventually be privatized. There are a lot of private sector coming into space in India. और आप देखेंगे Tatas and other groups would probably not Adani but Tatas and others would definitely come into space, and you would see a tough competition in years to Elon Musk space हो सकता है। Good point. तो जैसा आपने देखा, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और उन्होंने सही बात बताई है कि भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क किया है इधर स्पार्को और इसरो में, क्योंकि आप देख लें कि लास्ट पहले पाकिस्तान ने ज़रूर ट्राई की होगी इस चीज़ में, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अब इसरो धड़ाधड़ कर रहे हैं। अभी लास्ट आज एक और भाई करने जा रहे हैं लॉन्च। तो उससे हटकर अगर देखा जाए चंद्रयान 3 जब फेल हुआ था तब इधर फवाद चौधरी और इधर पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हो रही थी कि भाई देख ले फेल हो गया, इंडिया ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो देख ले यही चीज़ें इन्होंने की है। अब लास्ट जब लॉन्च किया है तो आप देख लेना अब चंद्रयान 3 कामयाब होगा और इनके मुंह में कुछ नहीं, ये वहीं के वहीं भाई रह जाएंगे, बस बातें करते रह जाएंगे। और लास्ट जैसे बयान दे रहा था कि भाई यहाँ से आप चांद देख लो, ऊपर जाकर क्या देखना है, ये चीज़ें बस इन्होंने अपना कुछ करना नहीं होता और जो कर रहा है उसके भी पाँव खींचने होते हैं और उसके ऊपर भी बातें करनी होती हैं। ये सब कुछ भाई अजीब किसी को है। कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बातें करने या ना करने से, क्योंकि एक दुनिया जानती है ये क्यों बातें करते हैं और कर बस बातें सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो कोई इंडिया वाले नहीं चाहते कि एक पाकिस्तान इस रेस में पीछे रहे। वो भी ये चाहते हैं कि आप कंपैरिजन करें एक हमारे साथ जो एक चीज़ों का बनता है। ये नहीं कि आप एक मतलब के गलत कंपैरिजन करें, आप मतलब कि एक ऐसी चीज़ें इंडिया में भेजें जिससे इंडिया को एक नुकसान हो और एक उनकी मतलब के मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़े। आप कंपैरिजन करें एक ठीक तरीके से जो बनता है, आप इकनॉमी पर कंपैरिजन करें, ये मतलब कि एक चांद पर जाने की रेस में कंपैरिजन करें, ये तरीका होता है कंपैरिजन का। नहीं बिल्कुल, दूसरा सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि मतलब इसरो में आप जिस तरह मतलब वर्किंग हो रही है ना वो पहले से अब बेहतर है और उसका क्रेडिट जो है ना वो पीएम मोदी गवर्नमेंट को वो ज़रूर दे रहे हैं कि अब उन्होंने काफ़ी फोकस किया और खुल के जो है ना उन्होंने सपोर्ट की है कि आप बेफिक्र हो जाएं और मतलब जिस तरह लास्ट थोड़ा सा आया था मसला मतलब, और साथ ही जो है ना वो पीएम मोदी जी ने सपोर्ट भी की थी खुला जाके मतलब उनको गले लगा के। तो इस तरह का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसका बहुत असर पड़ता है पूरी कौम के ऊपर और पूरी कौम की सपोर्ट इस तरह के कामों में जो है ना वो शामिल होती है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ हम अब इधर स्पार्को का हमें जो 2-4 चीज़ें हमने रटी हुई हैं, अगर इकोनॉमिकली देख लें या कोई भी हम चीज़ देखते हैं कि हम जो है ना वो 61 में ये थे, 62 में ये थे, ये जो 60 की दहाई जो है ना उसकी हमेशा मिसाल देते हैं। बाकी ये कि ठीक है आप थे लेकिन उसके बाद आप पीछे हो गए, तो लेकिन आगे का भी कुछ ना कुछ ज़रूर आप दिखाएं या करें कि कम से कम हम चलो उस वक्त ये थे फिर हम डाउन हुए फिर अब हम जो है ना वो एक स्पीड पकड़ रहे हैं। तो अभी स्पीड वाला तो काम है नहीं, लेकिन ये कि फिर ये कि ये चीज़ें फिर साथ साथ चलती हैं। बाकी उन्होंने भाई वो जीपीआरएस सिस्टम की जो बात की है वो कारगिल वार के दौरान वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और कि मतलब उस वक्त एक अमेरिकन सिस्टम की वजह से 3 दिन जब वो बंद रहा, लेकिन साथ ही जो है ना उन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना बनाएंगे और उसके ऊपर वर्किंग जारी है या में भी वो कंप्लीट हो गया। तो इस हवाले से काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने जो है ना वो समझाया। तो अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।